Good morning students. Today we will study subject maths and chapter number it is 12, topic smart charts. Okay, so let's start with first question. Suman has made a chart of her favorite animal which she has seen in the zoo. Make tally marks, write the numbers and answer the following question. See your first example is given in your textbook. उसमें दिया हुआ है first you see 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 elephants. Okay. See here one line for one element. It means एक line है that is for one elephant. So here you see 1, 2, 3, 4 and 5 line, 6 and 7. So here is 7 elephant. So we write the number of animals. It means elephant is 7. Okay. Then second 1, 2, 3, 4 and 5. Here we will do. इधर हमको draw करनी है. So 5 line. Here 1, 2, 3, 4 and here is 5. So 5 tigers. Numbers of tigers is equal to 5. Okay. Then here deer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. 12 deer. Okay. So one box is equal to 5 lines. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 here and 5 here. It means 10, 11 and 12. So I write here 12. See a monkey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So, okay. So here 5 lines, 5, 10, 15, 16, 17 and 18. So here is 18. And here is rabbit 1, 2, 3, 4, 5 and 6. One box is equal to 5 line, 1, 2, 3, 4 and 5 and 1 here. So it is 6. Okay, now we will count 7 plus 5, 12, 12 plus 2, 12 plus 12 is equal to 24, 24 plus 18 is equal to 18, 18 plus 6 is equal to 48. Total numbers of animals are 48. So see our first question, how many total animals are there? So we write our answer, there are 48 animals. Okay, which animal are the highest in the numbers? कौन से हैं? That is a simple. It is 18. It means that is a monkey. So we write monkeys are the highest in number. Then third one, which animal are the lowest in number? You see which one is lowest? Rabbits, only 6. So we write, sorry, here is a tiger. Okay, here is a 5. Least number, it means सबसे कम number, so it is a tiger. So we write here answer, tiger animal are the least in number. Okay. How many times more are the monkeys than the rabbit? You see rabbit is equal to 6 and monkeys is equal to 18. टाइम्स मतलब कितने टाइम, तो 3 को 6 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई करें तो वी विल गेट 18. So 6 3s are 18. So it is a 3 times. So we write here our answer, 3 times more are the monkeys than the rabbit. That is our answer. Okay. Now solve our second one question. See your second one question is here. Nima counted the vehicle passed on the road during 1 hour and made the following chart. Write the numbers of vehicle in the chart and answer the following question. Here this chart is given. Okay. Here is cycle. See 5, 10, 5 plus 5, 10, 15, 20 and here 1, 2 and 3 it means 23. Okay, scooter 1, 2, 3, 4, 5 and 6. One box is equal to 5 lines, so 6 box is equal to 30 lines. It means 30 scooter. 1, 2 and 3, 5, 5, 6, sorry 5, 5, 10, 15 and 1 it means 16. Total 16 auto rickshaws. Bus 5 line and 5 line it is equal to 10. Here truck
1, 2, 3 and 4. And car 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 10, 11 and 12. So count your numbers, you will get here 95. See, 3 plus 6, 9, 9 plus 4, 13, 13 plus 2, 15, 1 carry, 2 plus 1, 3, 3 plus 3, 6, 7, 8 and 9. So 95. And here question, how many vehicles did Nima see? So 95 vehicles Nima saw. Which vehicle did she the most? वो सबसे ज़्यादा कौन से देखती है? That is a scooter and its number is 30. So we write answer, she saw scooter the most. Which vehicle did she see the least? She saw truck the least. You see the numbers of truck only 4. Which vehicle are the more than 50 in numbers? 15 से ज़्यादा number है. You see that is a 16, 30 and 23. That vehicles are auto rickshaw, scooter and cycle. So we write answer of auto rickshaw, scooter and cycle more than 50 numbers. Then fifth one, how many times more in the numbers of scooter than the numbers of the buses? You see buses time, it means कितने time पूछा है. So you see here is 10. Okay. So here 10. Here how many time more the scooter than the buses? Scooter 30 and here buses is equal to 10. So 10 3s are 30. It means 3 times more scooter. So we write 3 times more is the numbers of scooter than the numbers of buses. Okay, then sixth one, here what part of number of auto rickshaws is the numbers of truck? ट्रक से वो कितने पार्ट बोला है? ये नॉट टाइम, टाइम नहीं है, इसमें पार्ट है. पार्ट होगा तो डिवाइड होगा. तो यू सी फर्स्ट ऑटो रिक्शा एंड ट्रक. ऑटो रिक्शा इज 16 एंड ट्रक्स इज इक्वल टू 4. सो 4 4s are 16 में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट पूछा है. इट मीन्स पार्ट, इट मीन्स डिवाइड. सो 4 4s are 16. सो वी राइट हियर 4 parts of numbers of auto rickshaws is the numbers of trucks. The difference between the number of which two vehicle is 2. कौन से दो व्हीकल हैं जिसके बीच का डिफरेंस ओनली 2 है? तो यू सी बस एंड कार. See, bus 10 and car 12. So 12 minus 10 is equal to 2. तो दोनों के बीच का डिफरेंस है, that is a 2. So we write our answer, bus and car difference between the numbers of vehicle is 2. Okay, then eighth one, the difference between the numbers of which two vehicles is 7. So you see cycle and scooter. 30 minus 27 is equal to 30 minus 23 is equal to 7. So difference is 7. So we write cycle and scooter difference between the numbers of vehicle is 7. That is our answer. Yes student, question number 3. The teacher asked students whether they help their parents at home. Which work do they like the most? The teacher made a chart from the information. Answer the question from the chart. Here you see students like to do work. Numbers of students. Going to market, that are 20 students. Making and servicing food, 10 students. Washing utensils, 5. Washing clothes, 2 students. Cleaning the house is equal to 3. Okay, so first question, which work do the student like the most? You see it is very simple, it is 20 and going to market. So we write answer, going to market work the student like the most. ज़्यादा सबको अच्छा लगता है going to market. The second, which work do the student like the least? सबसे कम कौन सा काम अच्छा लगता है?
You see, washing clothes only 2 students like. So we write washing clothes work the student like the least. Okay. Now here is third question. Show the following detail in the pie chart. See here your pie chart is given in your textbook. एक सर्कल में होता है पाई चार्ट. ओके, सो फर्स्ट here see, indicate the numbers of student who like to go in the market. अब इसमें आपको इंडिकेट करना है दिस फिगर में कि कितने बच्चों को, और कहाँ पर इसमें आप इंडिकेट करोगे कि 20 गोइंग टू मार्केट, जो सबको सबसे ज्यादा है दैट इज अ 20. You see here is a 20 and rest of 10, 15, 16, 17 and 320. मतलब हाफ बच्चे हैं, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक गोइंग टू मार्केट. सो जहाँ पे हाफ हो रहा है, यू सी हियर इज हाफ लाइन ऑफ द सर्कल. तो यहाँ पे मैं 20 लिखूंगी एंड लिखूंगी गोइंग टू मार्केट. ओके, देख लो. फिर उसके बाद हियर इज द बिगेस्ट, सबसे ज्यादा प्लेस स्पेस हियर इज ओनली, एंड देन हियर, देन दैट इज द मेकिंग एंड सर्विंग फूड इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट. सो आई मार्क हियर आई राइट 10. इधर मैं क्या लिख दूंगी 10 एंड देन आई राइट मेकिंग एंड सर्विसिंग फूड. ओके, क्योंकि ये उसके बाद सेकंड प्लेस है दैट इज अ बिग वन. और देख लो ये हाफ और हाफ का भी हाफ, इट मीन्स 10. ओके, देन हियर यू सी वॉशिंग यूटेंसिल दैट इज अ 5. और सबसे उसके बाद ज्यादा है दैट इज अ 5. दैट प्लेस हियर यू सी दैट प्लेस. ओके, सो आई राइट वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड इट्स नंबर इज 5. ओके, एंड देन हियर second washing cloth 2, only 2, so least space is here, so I write here washing cloth and I write here 2. इधर क्या हो जाएगा 2. then cleaning the house here is 3. okay, इधर we write 3 and write here cleaning the house. okay, that place is in such way we mark. ऐसा मैथमेटिकली जाएंगे, ऐसे रैंडमली नहीं. फर्स्ट वी ऑब्जर्व ऑल द स्टूडेंट्स का पूरा चार्ट को ऑब्जर्व करेंगे. फिर मैक्सिमम देखो टोटल इधर कितने हैं 30 हैं, उसमें से सॉरी कितने हैं 10, 30 एंड मीन्स 40 है, उसमें से 20 स्टूडेंट्स हैं. वो क्या है गोइंग टू मार्केट. तो हाफ पे मैं क्या कर दूंगी, फिर 10 पे फोर्थ पार्ट कितना है दैट इज अ 10 मेकिंग and servicing food. So I write is making and servicing food. In such way we mark in this pie chart. Okay, now see here's question number 4. Here the detail of the game liked by the students in classroom are shown. In the following pie chart, answer the question as per the pie chart. This pie chart is given. Okay, first we see this pie chart and then we read our question. Okay, which game do the student like the most? सबसे ज्यादा देखो कौन सी स्पेस है सबसे ज्यादा, दैट इज अ क्रिकेट. सो वी राइट क्रिकेट गेम द स्टूडेंट लाइक द मोस्ट. विच गेम ऑफ द स्टूडेंट लाइक द लीस्ट, सबसे कम कौन सी है, इट इज अ यू सी दिट इज अ कबड्डी. सो वी राइट हियर कबड्डी गेम the students like the least. Then arrange the students sections of selection of game in descending order. descending मतलब जो पहले सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो, फिर उससे कम in such way we arrange descending में बड़ा नंबर फर्स्ट, biggest number come first. So first cricket, okay, then second one hockey, okay, then football, then tennis and kabaddi. That game we arrange in descending order. Okay, फिर here do the half of the students of classroom like cricket and tennis, yes or no. First you see tennis
and cricket. Tennis, cricket, cricket and tennis. क्लासरूम में कौन सी? क्रिकेट एंड हियर क्रिकेट एंड हियर इज अ टेनिस. यस और नो, आपको यस और नो में आंसर देना है. Our answer is yes. Half of the students of a classroom like cricket and tennis. Then you say miss how? ये कैसे है? तो first you observe that is our pie chart. Pie chart में this one is a middle line. Okay, ये middle line है जो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है. तो ये हाफ पार्ट हियर एंड हाफ पार्ट हियर. तो ये पूछ रहा है डू द हाफ पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लासरूम लाइक क्रिकेट एंड टेनिस. तो हाफ पार्ट में देखो कौन सा है? क्रिकेट एंड टेनिस. दैट्स व्हाई वी राइट हियर यस हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लासरूम लाइक क्रिकेट एंड टेनिस. Okay, then fifth one, do the half of the students of classroom like football, hockey and kabaddi. See, your pie chart को देख लो. Football, hockey and kabaddi are another half part of the circle. देखो दूसरा पार्ट है, हाफ है. तो that also we write answer yes half of the students of a classroom like football and hockey and kabaddi. ओके, समझ में आ गया. देखो हाफ ऑफ सर्कल में है फुटबॉल, हॉकी एंड कबड्डी, तो तीनों हाफ में है. तो दैट इज हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दीज थ्री गेम्स एंड हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड टेनिस. इस तरीके से आधा आधा दोनों में टू पार्ट्स में डिवाइड है. ओके, देन हियर यू सी द सिक्स्थ वन इज which two games are liked by the same number of students. So here football and tennis game are the liked by the same number of students. See your pie chart. Students, see your question number 5th. Detail of favorite fruit of 100 students are given here. Make a pie chart on its basis and answer the following question. Okay. See here, mango 50, banana 25, apple 100, orange 10 and chiku 5. फेवरेट जो बच्चों के जो फेवरेट फ्रूट है उसमें से मैंगो 50 स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है. ओके, एंड बनाना 25, एप्पल 10, ऑरेंज आल्सो 10 एंड चीकू 5. इसके अकॉर्डिंग हमें पाई चार्ट बनाना है. एंड हियर इज वन सर्कल इज गिवन. ओके, so here you see mango 100 and total number of student is 100 and here mango is 50. It means half of the students like fruit mango. तो हम इस सर्कल को हाफ में डिवाइड कर देंगे. ओके, सो हियर वी राइट 50 एंड मैंगो. इट मीन्स आधे जो बच्चे हैं, सो वी इंडिकेट इन पाई चार्ट मीन्स 50 स्टूडेंट्स लाइक मैंगो फ्रूट. ओके, देन 25. Then 25 is the quarter of 100. 100 में से कितना है देखो मैं बता देती हूँ. 100 आफ्टर 25. 25 वन सा एंड 4 सा इज इक्वल टू 1/4 पार्ट. 1/4 पार्ट मीन्स ये जो हाफ था दैट इज द 180 का मतलब टू फुल सर्कल. आई एक्सप्लेन यू. फुल सर्कल इज 360, हाफ 80 एंड क्वार्टर इज 90. 90 में सीधा राइट एंगल बनता है. Okay, so we write here 25 and we write here banana. Okay, then apple 10. Apple कितना है? 10 है. 100 में से कितना है? 10. 0 0 कट 1/10 पार्ट है. तो हम इसी इतना कितना हो गया? That part half part mango, quarter part banana. अब this portion only remain. So I write here 10 and apple. दोनों को सेम है, both are same, so I divide it in same part. So I write 10 and 10 here apple and here orange and सबसे कम that is a 5, so here is a 5. Okay, in such way we divide this circle in according the liking of fruit. जैसे बच्चों का जो लाइकिंग है फ्रूट का फेवरेट है उसके अकॉर्डिंग हमने ये अरेंज कर दिया. ओके, अब आ जाते हैं उसके क्वेश्चंस. विच फ्रूट डू द स्टूडेंट लाइक मोस्ट? इट इज सिंपल, द मैंगो फ्रूट स्टूडेंट लाइक मोस्ट. विच फ्रूट डू द स्टूडेंट लाइक लीस्ट? इट इज सिंपल 5 एंड इट इज चीकू. द चीकू फ्रूट स्टूडेंट लाइक द लीस्ट.
How many time more the number of student who like the banana than chiku? Banana कितना है? You see 25. Chiku is 5. So 5 5s are 25. So I multiply chiku with 5. So product 5 5s are 25. So 5 time, here 5 time more is the number of student like banana than chiku. How many time more the number of student who like mango than orange? Mango और orange देख लो. Mango is 50 and orange is 10. Okay, 10 5s are 50. So this also 5 times. So we write 5 times more is the number of students like mango than orange. Okay, what part? Here is part. What part of the number of students like chiku than apple? Here is part. So first you write number of chiku 5 and apple is 10. So 5 by, I write here 5 by 10. 5 ones are and 5 twos are is equal to 1 by 2. So 1 by 2 part of the number of students like chiku than apple. Okay. Now question number 6. Sonu's routing of Sunday is given here. Indicate it in the pie chart. Pie chart के अंदर हमको indicate करना है. Here you see 8 hour is equal to sleeping. Okay. And 1 day is equal to 24 hour. 24 hour में से वो 8 hours क्या करता है? Sleeping है. So here example is given 8 upon 24. 8 ones are 8, 8 threes are 24 is equal to 1 by 3. So this portion is given, that is the sleeping. Okay. Then is 4 hour study. That 1 day is equal to 24 hour. So 24 hour में से 4 hour study. So 4 ones are and 4 6 are is equal to 1 by 6. Okay. And 3 are playing with friends. So 1s are and 8s are is equal to 1 by 8. 3 are daily activity, eating, bathing, getting ready. 3 1s are and 8s are is equal to 1 by 8. And 6 are spending time with mother and father. 6 1s are and 4s are, it means 1 by 4. 1 by 4. It means you know 1 by 4 अभी मैंने सिखाया, it is 90 degree. और क्वार्टर ऑफ सर्कल, फुल सर्कल कितने का? 360 का. ओके. हियर गिवन, ये तो हमको दे दिया गया है. ओके. फिर हम ये कर देंगे फर्स्ट क्वार्टर जिधर इंडिकेट किया गया है पार्ट में डिवाइड ही है. देन वी राइट हियर स्पेंडिंग टाइम विथ मदर एंड फादर और इधर लिख देंगे 6 1s एंड 6 4s इज इक्वल टू 1 by 4. ओके. आफ्टर दिस 3 are daily activity. So here I write daily activity 3 1s and 8s is equal to 1 by 8. दोनों सेम है तो हम एक बार दो नंबर सेम है 3 are and 3 are playing with friend and daily activity का फ्रैक्शन सेम है. So 1 by 8 playing with friends, it's 3 1s and 8s is equal to 1 by 8. Okay. अब बाकी बचा 1 by 6. So I write here 1 by 6 study time. Here 4 1s and 6 is equal to 1 by 6 study time. Okay.